Hello everyone, we are back with the Learning with Fun series, and the topic which we were discussing in the previous video was defense mechanism. So the basics and mature defenses has already been covered. In today's video we will deal about the remaining of the defenses. Today's session we will be starting it with a video based question. So a video will be played right now. Watch it carefully. Subtitles will be provided to you. आपने सुना मेरे बेटे ने मुझे पुकारा है। वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। दुर्गा बहन, 20 साल हो गए मुझे सुनते सुनते कि करण अर्जुन आएंगे। लेकिन ये दुनिया एक ऐसी बस्ती है दुर्गा बहन, जिसमें बसने वाले एक बार उजड़ जाते हैं तो फिर कभी लौटकर नहीं आते। अब देखना पुजारी बाबा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो लौटकर जरूर आएंगे। What a joke! करण अर्जुन आएंगे, हाँ? पागल बुढ़िया, मेरे पिता दुर्जन सिंह ने उन्हें भयंकर मौत दी है। भगवान भी उन्हें जमीन पे भेजने से पहले 10 दफा सोचेगा। So now let's see the question attached to the video. Which of the following defense mechanism is depicted in the video played? And the options are displacement, acting out, denial and repression. Before coming to the answer, let's first go to the defense mechanisms in detail. So the first category of the defense mechanisms which we have is the narcissistic defense mechanism. The narcissistic defense mechanisms are the most primitive defense mechanisms, as we have already discussed one of the defense mechanism category, and that was our mature defense mechanisms. So we have 4 such categories. One is narcissistic defense mechanism, the most primitive one, which is also known as the psychotic defense mechanism. The other one is the immature defense mechanism. The third one is the neurotic defense mechanism, and the most advanced is the mature defense mechanism, which we have already dealt with. So for now we will be discussing with the narcissistic defense mechanism, and in the narcissistic defense mechanism we have 2 important defense mechanisms, and that is denial and splitting. So let's first discuss denial. So as in the picture we can see this young lady here, she has seen death of her parents in front of her, but still she is not able to accept their death, and she is saying, she is thinking and she is praying to God and saying that I know they are here only, and they are hiding from me, they are playing with me, and they are like hiding from me for few days. They are going to come back, and I hope they will come back soon. So she is not able to accept the stress which is there because of the death of her parents. तो वो उसको नहीं ले पा रही है, and as a result of that she is not accepting the fact that they are gone, they will never come back. So this particular phenomenon is known as denial. So now let's see the other defense mechanism in the narcissistic defense mechanism, and that is splitting. Here in the picmonic, as you can see, the heading has been written in black and white. This has been intentionally done to show you कि हम लोग का जो splitting वाला defense mechanism होता है, that is कि either in our life we have everything which is black or which is white. So there are no colors in between. Either सब कुछ हमारे लिए white होगा या फिर black. मतलब everything either हमारे लिए best होगा या फिर worst. Nothing in between. मतलब good, better जैसा कुछ भी नहीं होगा, bad वगैरह कुछ नहीं होगा, directly worst होगा. So I hope ये समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. नाउ लेट्स सी द पिक्मोनिक हियर. इसमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ में, ठीक है, इस तरफ में जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द किचन. हस्बैंड ने वाइफ की बनी हुई खाने को टेस्ट किया. सो आफ्टर हैविंग टेस्टेड द फूड मेड बाय द वाइफ, ही सेड दैट दिस इज द बेस्ट dish I could have ever tasted. You are the best cook in the world. So just right now he said that she is the best cook in the world. Then next moment क्या हुआ कि next day husband was in bad mood. He came from the office, he tasted the food again. So after having tasted the food, he threw that food away, and he said that I have never eaten anything as such, and ये इतना awful था that you are the worst cook of the world. So
yesterday only, just yesterday, she was the best cook for him. Now today she is the worst cook for him. So she from best to worst, there is nothing in between. तो ये हमारा ये जो इस तरह का होता है, मतलब डायरेक्टली वर्ल्ड में आप बेस्ट हो, डायरेक्टली आप किसी के लिए वर्ल्ड में बहुत बुरे, डायरेक्टली किसी भी चीज़ को एकदम आसमान पे बैठा देते हैं, नहीं तो किसी को भी ज़मीन के अंदर डाल देते हैं. सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्प्लिटिंग. नाउ लेट्स come back to the question which we had for the video based session. So in the video we saw कि जो female है, that old lady, she said that my Karan Arjun will be back despite of the fact she knows that they haven't come back for 20 years. They have died in front of her eyes only, and they have not come back for 20 years, but still she is saying that they'll come back. I know they will come back. They have not gone anywhere. They are just hiding from me. They are going to come back. So yes, this defense mechanism is denial. So I hope that's clear. So now we will move forward with the immature defense mechanisms, but before that we will be having a video played again. So have a careful watch on the video. I live outside of Buffalo, New York, and I'm addicted to being an adult baby. I dress as a baby as often as I can. Whenever I come home, I always slip into one of my cute little outfits, and it helps me wash away all the stress of the big, tough world. So now, let's see the question attached to the video. Which of the following defense mechanism has been depicted in the video? And the options are denial, regression, repression, undoing. So, before coming to the answer, let's go and discuss the immature defense mechanisms. So we have a mnemonic for the immature defense mechanism, and that is PIDA. PIDA in English is known as pain. So as we can see, this old man is suffering from lot of pain in headache and knee ache वगैरह. So this is depicting the our mnemonic, that is PIDA. So let's see. We have P for projection, I for introjection. So let's see. P for projection, I for introjection, R is for your regression, A is for acting out, and with acting out we will be remembering passive aggressive behavior. So let's see one by one. So first defense mechanism in this is our projection, and as here we can see, this young boy here, he goes to these girls out here and he says them कि this particular girl who is here, she is very ugly. He thinks that she is very ugly. He goes and tells to these girls. Then what happens? He come back to this girl and says that these girls think that you are ugly. So what he is doing, he is like कि वो अपने thoughts को उन गर्ल्स पे डाल रहा है, जबकि वो अब खुद ये सोचता है that this particular girl is ugly, but what he says to her is कि they think that you are ugly. So I hope that this mnemonic is clear to you. So now let's move forward. The other defense mechanism which we have is introjection. What happens in introjection is कि जैसे इसमें क्या था प्रोजेक्शन में, इट वॉज कि अपने थॉट्स हम दूसरे पे दे रहे हैं, बट इन इंट्रोजेक्शन व्हाट हैपन्स कि दूसरे की कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ थॉट्स हमारे अंदर इनकलकेट कर लेते हैं हम लोग ड्यू टू एडमिरेशन. हम लोग इतना ज़्यादा किसी को एडमायर करते हैं कि उसके थॉट्स, उसकी एक्टिविटीज़ हमारा पार्ट बन जाती है, हमारे एक्टिविटीज़ हमारे डेली लाइफ की. सो एज हियर वी कैन सी दिस यंग बॉय, ही एडमायर्स सलमान खान अ लॉट, एंड ड्यूरिंग मतलब वो इतना ज़्यादा एडमायर करता है कि इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर एज वी कैन सी कि सलमान खान पीछे की तरफ स्पेक्स लगाता है. सो व्हाट हैपन्स, सो अनइंटेंशनली व्हाट हैपन्स कि ये जो है बच्चा वो भी अपना स्पेक्स पीछे की तरफ अनइंटेंशनली रखने लगता है. सो अनइंटेंशनली ही ऑल्सो पुट्स हिज स्पेक्स एट द बैक ऑफ हिज टी-शर्ट. तो दिस activity has been developed from him, matlab from Salman Khan in him. So this is known as introjection. I hope it's clear. So now let's move forward. Now we have the third defense mechanism in this category is regression. So what happens in regression is कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे stress condition में होते हैं, so we want our mind wants us to
go back into the time when we were like very comfortable, we did not have any stress, हम लोग को ये भी नहीं सोचना पड़ता था what others are going to think of us. तो उस phase में हम लोग को ले जाने की कोशिश करता है, and that particular phase of our life is our childhood. So what happens in regression, that we go back to our childhood so that we can vent out our particular emotions, क्योंकि being an adult, crying is like considered as a bad thing. So what happens, we go back to the we regresses back, we go and like हम लोग अपने माँ के गोद में सो जाते हैं या फिर किसी से गले रख के खूब रोना. So these particular actions for us is regressing. So here in the picture we have shown कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टॉक्स हो रहे हैं, एंड इन दिस कपल टॉक वी कैन सी कि जो गर्ल है शी इज सेइंग सोना मेले को भूख लगी है. ओके, सो व्हाट ऑन दैट व्हाट बॉयफ्रेंड रिप्लाइज इज ओले 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 मेले बाबू को भूख लगी है. सो हियर वी कैन सी द tone of both the girl and boy are like कि वो बच्चों की तरह बात कर रहे हैं. So this particular thing is also known as regression. And the other example to this can be कि I had a bad day at office, I come back to the home and I go back to my mother and say कि मुझे अपने गोद में सुला लो and please मुझे लोरी सुनाओ. ठीक है, so this particular act done by me is also regression. I hope that's clear. Now let's move forward to the fourth of our defense mechanism in this category, and this is acting out. So here we need to know difference between acting out and passive aggressive behavior. So होता क्या है कि acting out में we मतलब like कोई particular हमारा stress का जो emotion है हमारे अंदर, उसको हम लोग किसी इमोशन मतलब किसी पर्टिकुलर इमोशंस के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं जस्ट बाय आर बिहेवियर्स. ठीक है, जबकि पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर में क्या होता है कि वी आर लाइक डूइंग सच एक्ट्स कि जिसके थ्रू हम लोग अपने इमोशंस को वेंट आउट करते हैं. तो उसमें एक्शंस के थ्रू करते हैं, इसमें इमोशंस के थ्रू वेंट आउट करते हैं. So as in the picture we can see कि mom and dad are having a bad fight here and they are saying you are the worst decision of my life, I want a divorce. On listening to it, son goes and मतलब he has lot of stress as their parents are getting divorced. So वो इतने stress में होता है, he goes out and he vents all his emotions out by eating lot of food furiously. तो वो खाना खा के अपने emotions को vent out कर रहा है. So here he is not doing any such act जो कि opposite है कि उसको कुछ बोला गया, उसके opposite उसने कुछ actions किया, ऐसा नहीं किया. उसने अपने emotions को दिखाना चाहा through मतलब like खा के और ये सब करके. So this is acting out. Whereas in passive aggressive behavior what happens कि हम लोग aggressively behave करेंगे. In that like for example here this dad is shouting on this girl, ठीक है, और उसको बोल रहे हैं कि go change मतलब change your clothes and get tea and snacks from the kitchen for me. So what does the girl do? She goes changes her clothes and she brings the tea and snacks for him, but she deliberately spills it over. तो इसमें क्या होता है, उसने पूरा गिरा दिया. ठीक है, उसने जानबूझ के ऐसा किया so that she could मतलब वो पापा को कुछ बोल तो नहीं सकती थी and now she has like done the opposite thing. पापा ने बोला लेके आओ, she spilled it over. So this is a passive aggressive act done by her. So I hope it's clear what is the difference between acting out and passive aggressive behavior. Now let's go back to the question which we had. So as we have seen our mnemonic also, pida, so P was projection, I is introjection, the opposite of it, then R is regression, A is acting out, and with acting out we have to remember passive aggressive behavior. I hope it's clear. Now let's go back to the question which we had, and in the video we saw ki the girl named Riley, she is 25 years old, and despite of that when she comes back from the office she gets dressed all in her childhood clothes, मतलब childhood type के clothes में वो dress हो जाती है in the childish clothes, and she goes back to the crib, not the bed, just she has made a crib for her, उस पे वो जाके सो जाती है and she acts like child. तो this is her मतलब defense mechanism used by her to
vent out her stress of the world. So this particular defense mechanism is nothing but our, yes, regression. I hope that's clear. So now let's move to the third part of our discussion, and that is our neurotic defense mechanism. And before that, we will again have a video played, so have a watch on it. यार क्या हो रहा है लक्ष्मी? डीसीपी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अमुदा के मर्डर केस की फाइल क्लोज होने से पहले संपिता के मर्डर से कोई कनेक्शन है क्या इसका? कैसे? नहीं सर, वो ऐसा मैं तो क्या है लक्ष्मी? I have an idea, sir. सर, ये आइडिया एक बार ट्राई करके देखें। अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई ना, तो हम लोग के लिए सिर दर्द हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री, सीएम, मीडिया, सबको जवाब देना पड़ेगा। होगा या नहीं होगा ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वो कर, जा। Now let's see the question attached to it. Which of the following defense mechanism has been depicted in the previous video? Sublimation, displacement, suppression, repression. So now let's see the neurotic defense mechanisms first. We will come back to the question again. So here also we have a mnemonic, and that is social distancing. Duri hai zaruri. So duri hai zaruri. So it is duri. So D-U-R-R-I. Duri. So I hope it's clear. We have D for displacement, U for undoing, R for repression, R for reaction formation, R for rationalization, I for intellectualization. I hope it's clear. Now let's see one by one. D is for displacement. So displacement is nothing but the shifting of the emotions. So here, as we can see, this husband has a bad day at the office. He could not shout on his boss back. तो वो क्या करता है, he comes back home and shouts on the wife. ठीक है, और वाइफ पे चिल्लाता है. एंड देन वाइफ वो क्या करती है कि वो अपना गुस्सा, वो अपने स्ट्रेस को वेंट आउट करती है ऑन हर सन. फिर वो बच्चा जो है वो क्या करता है कि अपनी बहन पे, छोटी बहन पे अपना सारा गुस्सा निकाल देता है. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग कि the person superior is like dominating on the inferior person. Inferior in the sense, inferior in position or inferior in strength. I hope it's clear. So it is nothing but shifting of the emotion on like the people who are inferior to us. So now let's move forward. Next defense mechanism is undoing. So in this defense mechanism, as we can see कि ये husband है, husband ने सुबह में wife पे बहुत चिल्लाया. Then wife cried. Then husband went to the office. In the office, meanwhile, he was thinking कि I did not do a good thing with today with my wife. So he buys her a gift. ठीक है, फिर उसके बाद वो घर जाता है and he surprises her and everything sorts out. तो इसमें क्या हुआ कि उसको कुछ, उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, उसके मन में ही ऐसा आया कि he should मतलब like take a gift, buy a gift for her and everything will be sorted out. He has not done a good thing in the morning. So I hope it's clear. He is like undoing all the things he did in the morning. So this particular defense mechanism is known as undoing. Now the third defense mechanism which we have is repression. So what happens in repression? Repression has to be differentiated with suppression. So suppression में क्या हो रहा था, as we discussed it in the mature defense mechanisms, कि उसमें हम लोग intentionally अपनी कुछ यादों को दबाना चाह रहे थे. We were trying to bury our emotional मतलब outburst वगैरह, कुछ भी emotional stressing conditions या thoughts हमारे थे, तो उसको हम लोग intentionally unconscious mind में ले जाने की कोशिश कर रहे थे. But here what happens in repression, our mind automatically मतलब कुछ थॉट्स को जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, उनको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इट टेक्स इट डाउन ऑल थ्रू द डीप ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. एंड व्हाट हैपन्स कि हम चाहें भी तो उस थॉट को वापस से याद नहीं कर सकते. वी कंप्लीटली फॉरगेट इट. ठीक है, तो एज हियर इन द दिस पिकमोनिक वी कैन सी दिस लिटिल गर्ल व्हेन शी वाज लिटिल and this girl is she here also, she has grown up. तो इसमें इस हाफ में the left half यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसको चाइल्डहुड में उसने अपनी फ्रेंड को बोला, ठीक है, अपनी फ्रेंड को बोला कि माई अंकल टचेज मी बैडली. ठीक है, ये बात उसने खुद ने अपनी दोस्त को बताई होती है. व्हाट हैपन्स वन डे इन मतलब एडल्टहुड, उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि
आपके अंकल तो ऐसे ही हैं वैसे हैं, शी वॉज सेइंग बैड थिंग्स फॉर हर अंकल. तो उसने बोला कि हाउ कैन यू से इवन से कि मेरे अंकल इवन थिंक और से कि माई अंकल कैन डू एनीथिंग बैड टू मी, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट शी ओनली टोल्ड इन द चाइल्डहुड दैट योर अंकल यूज टू, मतलब her uncle used to touch her badly, but now she is denying the particular thing that no, I never said it, my how can you ever think कि मेरे अंकल कुछ ऐसा कर भी सकते हैं. सो हियर शी डोंट इवन रिमेंबर कि उसने कभी ऐसा कुछ कहा भी था. तो शी हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर एक्ट डन बाय हर अंकल. आई होप इट्स क्लियर. So now let's move forward to the fourth defense mechanism, and that is rationalization. अब rationalization में क्या होता है कि for a act done by us हम लोग उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कुछ रीजंस देने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक अल्कोहलिक है, उससे आपने पूछा कि क्यों पीते हो, तो इन रिप्लाई ही सेड बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस एट माई होम दैट्स वाई आई ड्रिंक. देन उससे किसी और ने पूछा कि आप क्यों पीते हो, देन ही इज सेइंग कि बिकॉज ड्रिंकिंग इज गुड फॉर हार्ट. देन किसी और ने पूछा कि आप क्यों पीते हो, तो ही इज सेइंग बिकॉज इट रिमूव्स ऑल द स्ट्रेस आई हैड फ्रॉम द ऑफिस. सो ही इज गिविंग डिफरेंट answers for the questions asked, for the same question asked, and he is trying to justify his particular act, that is drinking alcohol. So this is known as rationalization. I hope it's clear, as here we can see in this image that they are saying alcohol takes away all the stress, and in the next scenario they are saying alcohol is good for heart. So I hope it's clear now. So let's move ahead. Next defense mechanism which we have is reaction formation. So here what happens कि एकदम से कोई ऐसी बात जो हम ऐसा बोलते थे कि मतलब हम कभी नहीं करेंगे, एंड व्हाट हैपन्स जब वो हो जाता है वी आर लाइक कि एकदम हम अपोजिट हो जाते हैं अपने इमोशंस के. लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर इन द पिक्चर वी कैन सी कि दिस लेडी शी वॉज फाइटिंग विथ हर हस्बैंड कि वो कभी भी नहीं चाहती है कि वो इवन एक सिंगल बच्चा भी उसको हो. शी डोंट वॉन्ट इवन अ सिंगल किड. ठीक है, तो वो ऐसा बोलती है. ठीक है, बट क्या होता है कि लेटर ऑन इन हर लाइफ व्हेन शी हैज़ 3 किड्स, ठीक है, जबकि उसको एक भी नहीं चाहिए था. ठीक है, एंड नाउ शी हैज़ 3 किड्स एंड शी इज सेइंग दे आर माई लाइफ. सो व्हेन मतलब जब नहीं थे तो शी वॉज सेइंग कि मैं इवन एक भी नहीं चाहती हूँ. नाउ व्हेन शी हैज़ 3 एंड शी हैज़ एन इमोशन लाइक दे आर माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट देम. मतलब शी हैज़ जस्ट चेंज्ड हर इमोशन फ्रॉम नॉट हैविंग अ किड to I have 3 kids and I'm very very happy with them and I can't live without them. So this particular defense mechanism is reaction formation. I hope it's clear. Like this can also be true in the sense कि एक दूसरा example लेते हैं to explain it better कि for example मैंने कहा कि मैं उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ. ठीक है, और what happens when that guy comes in front of me, I am like कि I love you. So this has changed. Like मैंने किसी को कहा कि मैं उस लड़के को hate करती हूँ, and when that guy is in front of me, I am saying I love you. So that is a complete change of my thoughts. So this is known as reaction formation. I hope that's clear. Now we have the last defense mechanism and that is intellectualization. And in intellectualization आप इसको इस तरह से समझो कि कोई ऐसा चीज़ जो कि मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता. फॉर एग्जाम्पल आई नो कि having a tumor is a very very distressing situation for me. तो मेरे को ये बहुत बुरी तरह से इमोशनली स्ट्रेस में डाल सकता है. सो हेयर इन द पिक्चर वी कैन सी कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट से बोल रहा है कि यू हैव अ ब्रेन ट्यूमर, एंड ऑन दैट पेशेंट ने ये नहीं बोला कि मेरे पास कितने दिन है, जैसे नॉर्मली क्या हमारे आंसर्स होते हैं डॉक्टर व्हाट शुड आई डू, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, ये सब हम लोग बोलते हैं. उसने इस तरह से नहीं बोला, रादर ही इज सेइंग कि ओ येस आई हैव रेड अबाउट इट, इट इज़ अ ग्लायल ट्यूमर ना, इट हैज़ मेनी हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स. सो ही इज़ ट्राइंग टू इंटेलेक्चुअलाइज इट. तो ये उसका इमोशंस के साथ डील करने का तरीका है. सो दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. आई होप इट्स क्लियर. वी हैव फिनिश्ड ऑल द डिफेंस मैकेनिज्म्स. डाउट्स आर वेलकम. थैंक यू.